I think we should start now. Mhm. So, JVM everyone, my name is Rahul. So, I welcome you all today in our Bluebird Foreign Education and Career series. And we have our friend Deepali Wighe with us. She is a student of sociology. She has complete she has com she has com she has completed her masters and MPhil from TISS Mumbai. Now she is pursuing her PhD in from Goethe University at Frankfurt in Germany. I welcome you, Deepali. You can share your experience and guide our students. Thank you very much, Rahul. Can we allow our participant to open their camera, maybe? Camera, okay. If Yes, now they can. Yeah, because it would be nice to interact with people when they are online rather than speaking alone. Yes, yes. Uh, okay, so Jai Bhim, everyone. I'm really glad to be a part of this Digital Nalanda's Foreign Education and Career series. Yesterday only we have celebrated our Constitution Day, 26th of November. And I also congratulate each one of us for celebrating Constitution Day, which gives us this right to education, right to freedom, everything. And I salute all the great social reformers, Dr. Babasaheb Ambedkar, Savitribai Phule, Mahatma Jyotiba Phule, Fatima, and great tribute to all our social reformers. I'll start with, so some of the students are saying that I should share my experience in English, Prashant. I'll speak in both Hindi, English, mixed language, because we have audience from no different parts of the country. So should I share my presentation, Rahul? Yes, yes, you can. Is it visible? Yes, yes, it is visible. लेकिन आपका ये पीपीटी शो नहीं हो रहा पूरा, ये फाइल्स ही दिखा रहे हैं. Resume. एक मिनट. Yes, yes. Oh. अभी दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है. ठीक, अभी ठीक है पूरा? यस यस यस, हाँ अभी अच्छा सही है. I would also encourage our participant to open their camera if I have they allowed want. them. Like, Yeah. I have allowed them. If someone wants to open, they can. Okay. So let's start. आज का टॉपिक है सेशन का experiences, challenges and learnings while applying for overseas academia. And this is a part of Bluebird School of Foreign Education and Career series, which is run by Digital Nalanda. Digital Nalanda जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ब्लूबर्ड स्कूल ऑफ फॉरेन एजुकेशन एंड करियर सीरीज जो अभी चल रहा है, जिसमें अलग अलग मेंटर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं या फिर कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, प्रोसेस मतलब एग्जैक्टली क्या करना है प्रोसेस, और ये सब तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा कि क्या कैसे अप्लाई करना है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे. और ये जो एजुकेशन सीरीज है इसमें यही कोशिश है
सारे मेंटर्स की, कि जो स्टूडेंट्स आते हैं रूरल बैकग्राउंड से, जो कि वर्नाकुलर मीडियम में ज्यादातर पढ़ते हैं, उनके लिए ये आसान हो, ये इस सीरीज का मेन पर्पस है। जैसे मैंने कहा, डिजिटल नालंदा ये वेबसाइट है जिसपे आप, जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी लोग आज पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, उनके लिए ये वेबसाइट है जिसपे आप डिजिटल नालंदा के बारे में जान सकते हैं, या फिर ये जो सीरीज है इसके बारे में, जो बाकी भी सेशंस है या रेगुलर जो सेशन होते हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। So the basic purpose of this today's session is to encourage first generation learners, especially female students, those who are coming from scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, nomadic and denotified tribes, Muslim and other minority groups to apply for higher education in foreign countries. तो आज के सीरीज का उद्देश्य ये है कि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं एससी एसटी ओबीसी या विमुक्त कम्युनिटीज से, उनको एनकरेज करना, उनको जानकारी देना कि अगर फॉरेन में अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। एंड तो इससे पहले कि हम लोग हायर एजुकेशन ये प्रोसेस के बारे में जाने, let's look at some data and facts about higher education in India. So according to All India Survey of Higher Education 2018-19 report, national ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पूरा इंडिया का था 26.3%। उसमें से only 23% students were enrolled from those who are from scheduled caste community, 17.2% students were from scheduled tribe, and 36.2% students are from other backward classes. And if we look at the students from Muslim community, the enrollment ratio was only 5.2%, and other minority it was only 2.3%. So if we look at the gross enrollment ratio. So what is gross enrollment ratio? It is the ratio of total enrollment regardless of age to the population of the group that officially corresponds to the level of education shown. मतलब कि जो कि एनरोलमेंट होता है इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, उसका जो टोटल रेशियो है ये पूरे कंट्री का रेशियो है, जो कि इतना कम है। और हायर एजुकेशन में स्पेशली एससी एसटी ओबीसी वीजेएनटी नोमैडिक डीनोटिफाइड ट्राइब्स का तो हमारे पास डेटा ही नहीं है नेशनल लेवल पे। और विद रेफरेंस टू हायर एजुकेशन, तो ये सारे फैक्ट्स है, ये डेटा हमें ये बताता है कि देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम दीज और सर्टन सोशल कैटेगरीज दोज हु आर joining into higher education, and that's why this session becomes important to understand what are the process to apply for higher education in foreign countries. Yeah, and so why it is important to apply for higher education? We have a great example of Dr. BR Ambedkar, जिन्होंने he has completed his BA, MA, PhD, MSc, LLD, DLIT, and different degrees from different countries in the world, and he has written a great the largest democratic Indian constitution in India, through which he has provided equal rights to everyone in the country, irrespective of his caste, gender. तो ये मुझे लगता है कि बहुत he's one of the source of inspiration for me as well, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि एजुकेशन के सिवा अगर हमें सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है, if we want to change our society, if we want to give them education, basic all the basic facilities, education is the only way. और इसीलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
So in today's session, we are going to cover these basic questions, why it is important to apply for higher education, how to find and approach professors, how to apply for higher education abroad, how to find different universities, how to find various scholarships, what are the scholarships and fellowships available, how to prepare for GRE, TOEFL and IELTS. These are different language exams. And how to write research proposal, statement of purpose और resume. तो ये बेसिक सवाल है जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं या अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके जो भी सवाल होंगे आप कहीं पे लिख के रखिए, या फिर बीच में भी आप जैसे यहाँ पे हाथ मतलब रेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप एंड में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सेशन मुझे लगता है इंटरेक्टिव होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए है। सो ये बेसिक सवाल है जो हम आज के सेशन में कवर करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन 3 मेन aspects of today's session. First, admission, funding, scholarships and language certificate. क्योंकि अगर आपके पास एडमिशन है और फंडिंग या स्कॉलरशिप नहीं है तो आप फॉरेन में एडमिशन नहीं ले सकते, है ना। तो आपको ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देखनी है, एडमिशन का प्रोसेस और फंडिंग और स्कॉलरशिप और लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो एडमिशन के लिए देयर कुड बी specific way of application for specific university, लेकिन but there are no basic general process of application which you can use when you are applying for PhD or postgraduate courses in foreign country. तो यूनिवर्सिटी वाइज अलग हो सकता है प्रोसेस, लेकिन एक जनरल प्रोसीजर है जो आप अगर फॉलो करें तब भी आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ सोशियोलॉजी में, तो मेरा ज्यादातर बैकग्राउंड सोशल साइंसेस से आता है, तो लेकिन फिर भी अगर आप साइंस में भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आप अगर सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं तब भी आपके लिए वो इजी होगा। So admission, funding, language, and then we will speak about what are the different challenges and learnings. So this is the general process of admission when you are applying in a foreign university. When you are applying for postgraduate courses, there is a different procedure. No sound. राहुल किसी ने मैसेज किया है? हाँ, मैं उसी का रिप्लाई कर रहा हूँ। उनकी एंड से कोई प्रॉब्लम होगा। वी आर एबल टू हियर यू क्लियरली एक्चुअली। यू कैन कैरी ऑन। तो सो एडमिशन के टाइम पे see, when you are applying for postgraduate courses, there are different requirement for admission. When you are applying for PhD courses, there are different requirement. But I will talk about PhD and postgraduate courses. लेकिन mainly PhD program, क्योंकि उसमें first when you are applying for PhD, तो पहला चीज है आपका कि आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर पीएचडी में रिसर्च करना चाहते हैं। अगर आपके पास पीएचडी रिसर्च प्रपोजल रेडी है, देन यू कैन थिंक ऑफ कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी या फिर कौन से प्रोफेसर को अप्रोच करना है, वो नेक्स्ट स्टेप आएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपके पास पीएचडी रिसर्च प्रपोजल आपका रेडी होना चाहिए। तो पीएचडी रिसर्च प्रपोजल में क्या होना चाहिए? पीएचडी रिसर्च प्रपोजल में आपका टॉपिक, आपके ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस और आप मेथड कैसे करेंगे रिसर्च। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है पीएचडी रिसर्च प्रपोजल का। उसमें भी यूनिवर्सिटी वाइज या फिर कंट्री वाइज भी डिफरेंसेस हो सकते हैं रिसर्च प्रपोजल जब आप लिखते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं आपके रिसर्च प्रपोजल में।
उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिज्यूमे और सीवी। सो रिज्यूमे और सीवी में भी एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आप फ्रेशर है विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस तो आप लिखेंगे रिज्यूमे, और अगर आपके पास एजुकेशन के बाद कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे सीवी, क्यूरिकुलम विटी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें ज्यादातर टाइम नहीं पता होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका रिज्यूमे है या फिर आपका सीवी है। और डिफरेंट कंट्री वाइज भी सीवीज का फॉर्मेट अलग होता है, या फिर डिफरेंट कभी कभी इंस्टीट्यूशन वाइज भी सीवीज का फॉर्मेट अलग होता है। बट जब आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप इंटरनेशनल कुछ जनरल फॉर्मेट्स आते हैं, उसमें आपको अपना सीवी बनाना है। सो दिस कुड बी योर फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर योर रिसर्च प्रपोजल एंड प्रिपेयर योर सीवी रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. Then what will be the next step then? Find renowned professors in your research area and university and check eligibility criteria. अब रिसर्च ये जो प्रोफेसर्स है आप ये कैसे ढूंढेंगे? आपके पास टॉपिक रेडी है, आपका सीवी रेडी है, अभी आपको प्रोफेसर ढूंढने हैं कि आपको किन के साथ काम करना है। तो ये आप कैसे ढूंढेंगे? जब हम रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं उस टाइम पे हम लिटरेचर रिव्यू भी लिखते हैं रिसर्च प्रपोजल में, राइट? तो लिटरेचर रिव्यू करते समय हम लोग बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर किसने काम किया है। तो आपको, अगर आप जनरली ये चीज देखेंगे तो आपको ये भी आइडिया लगेगा, आ जाता है कि कौन कौन से प्रोफेसर है जिन्होंने आपके रिसर्च टॉपिक के ऊपर काम किया है। तो यू कैन अप्रोच दोज प्रोफेसर्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क, या फिर किताबें, जैसे कि व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर माय पीएचडी इन यूके, आई हैव read one book of one professor in University of Leeds, I think. तो उन्होंने एक बुक लिखा था नोमैडिक ट्राइब्स के ऊपर। तो वो बुक पढ़ के मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग होगा इनके साथ काम करना, तो मैंने वो बुक का रेफरेंस देके उनको अप्रोच किया था। So these are different ways of approaching or finding professors in your research area. उसके बाद आप प्रोफेसर के नाम अगर आपको मिल जाए गूगल पे, आप इजीली उनका प्रोफाइल देख सकते हैं, लिंक्डइन पे आप उनका प्रोफाइल देख सकते हैं, रिसर्च गेट जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आप उनका प्रोफाइल देख सकते हैं, और उस हिसाब से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं विथ योर रिसर्च प्रपोजल एंड सीवी। तो इसके बाद आपको पता चल गया कि आपको किस प्रोफेसर को अप्रोच करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका उस यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या, या कोई फॉर्मेट है क्या। So you need to check whether they have any specific format of research proposal or resume or CV of that particular university. वो चेक करने के बाद आपको उस फॉर्मेट में ये सब आपको एडिट करना है, लिखना है। उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल, सीवी इंटरनेशनल फॉर्मेट या फिर जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है उसमें आपने लिख लिया, वो रेडी हो गया। उसके बाद आपको अप्रोच करना है प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी को। सो इन मोस्ट ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज दे हैव साउथ एशियन स्टडीज सेंटर्स, क्योंकि इंडियन जो है वो एशिया में आता है, तो साउथ एशियन स्टडीज सेंटर्स बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं। तो अगर आपको प्रोफेसर का नाम नहीं मिल रहा है या फिर आपको नहीं पता चल रहा है, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी प्रोफेसर, देन यू कैन also approach this director of South Asian Studies centers which are there in different European countries. और साउथ एशियन स्टडीज सेंटर में भी डायरेक्टर को आप जब आप when you are writing an email you can mention that I am interested in doing PhD in so and so topic, and I think I have gone through your article or book and I think I can work with you, or it would be interesting to learn from you on my so and so topic. So these are different ways of approaching professors when you are applying for PhD. तो आपको डॉक्यूमेंट्स और इनके साथ फिर आप ईमेल पे भी
बीच बीच में अगर स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज हैंड रेज कर देना, ठीक है? तो ये डिफरेंट तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं प्रोफेसर्स को। तो अब ये यूनिवर्सिटीज आपको कैसे ढूंढना है ना? तो यहाँ तक हमारा आ गया कि हमारे पास प्रपोजल है, सीवी है, हमने प्रोफेसर भी ढूंढ लिए, उनके हिसाब से हमने लिख भी लिया डॉक्यूमेंट्स, फिर हम लोग अप्रोच भी कर रहे हैं। लेकिन देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप कि आपको क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में वो यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। तो ये क्या है, हम लोग ये देखेंगे अभी कि हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटीज. So there are two types of university rankings in the world. QS World University Ranking, it is created by topuniversities.com. It is one of the top international rankings measuring the popularity and performance of universities all over the world. तो ये जो है QS वर्ल्ड रैंकिंग, ये वर्ड आपको स्कॉलरशिप के टाइम जब आप अप्लाई करेंगे इंडियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, वहां पे भी आपको ये दिखाई देगा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ये एक एनुअल पब्लिकेशन होता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग का बाय टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन। तो आपको ये वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन सोशियोलॉजी कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है, या फिर इन बायोलॉजी, इन फिजिक्स, इन सोशल वर्क, जो भी है, जो जिस भी आप टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के वेबसाइट पे जाके यू कैन चेक द रैंकिंग ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, या फिर रैंकिंग के हिसाब से भी आप यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो दे हैव एन क्राइटेरिया कि टॉप 200 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ही अगर आपको एडमिशन मिलता है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसीलिए ये दोनों वेबसाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके थ्रू आपको देखना है कि आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है, और उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो ये दो वेबसाइट से दो फायदे होंगे। एक तो आपके टॉपिक में कौन से यूनिवर्सिटीज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आते हैं, ये आपको पता चलेगा। और दूसरा, जिस यूनिवर्सिटी को अप्लाई आप कर रहे हैं वो इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है या नहीं, और अगर नहीं है तो आपको उसमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको स्कॉलरशिप में दिक्कत होगी। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट वेबसाइट which will be helpful while searching for universities according to their QS world ranking. So then what are the other documents which you should keep with yourself ready when you are applying for PhD or for higher education? So the first one is CV and resume. उसका हमने डिफरेंस देख लिया कि क्या CV और रिज्यूमे में डिफरेंस है। रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल में भी आपका टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, ये सब आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक डॉक्यूमेंट्स वुड बी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर हायर एजुकेशन। व्हाई? बिकॉज your statement of purpose will give an idea to the examiner that why they should select you for PhD or for any postgraduate program. तो statement of purpose में आपको लिखना होता है कि आपका टॉपिक क्या है, और वो इंफॉर्मेशन जो आपके एप्लीकेशन में कहीं पे भी नहीं आई है, जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है हायर एजुकेशन में आने के लिए, आपका पर्पस क्या है ये PhD करने का, या फिर ये स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने का। सो देयर कुड बी डिफरेंट आंसर्स फॉर दीज डिफरेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट्स है वो एक यूनिक है, हर एक स्टूडेंट्स का एक यूनिक स्ट्रगल है, या जो भी है, ये लर्निंग्स है, ये सब चीजें है। तो हर एक का जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है डिफरेंट रहेगा, लेकिन उसमें मेन सवाल यही रहेंगे कि आपको क्यों करना है PhD, इसी टॉपिक में क्यों करना है, आपका क्या मोटिवेशन है ये सब करने के पीछे।
क्योंकि ये आपका कुछ पर्सनल मोटिवेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन माय केस व्हेन आई वाज अप्लाइंग, तो मेरा स्टेटमेंट, बीइंग अ गर्ल फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, रूरल विलेजेस इन महाराष्ट्र, so when I was applying, I never planned that I will go into academics, और मैं बहुत ऐसे जाके PhD वगैरह करूंगी, ऐसे मैंने कुछ बहुत सोचा नहीं था। कुछ बेसिक सवाल थे कि जब भी व्हेन वी स्पीक, जब भी घर में बात करते हैं या फिर कहीं पे बात हो रही है, तो इक्वल ट्रीटमेंट जो एक बॉय या फिर लड़के को मिलता है वो लड़कियों को नहीं मिलता है। तो ये तो जनरल है, मतलब ये तो इंडिया में हर जगह ये दिखता है कि वी हैव एक्सट्रीम पैट्रियार्की, और ये सब चीजें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे अपनी बात रखनी है, और वो बात रखने के लिए आपको कभी कभी ऐसी पोजीशन पे खुद को लेके जाना पड़ता है जहाँ पे आपकी सब सुने। तो ये एक मोटिवेशन भी था कि अभी तक कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता है या फिर नहीं सुनता है, तो मुझे एजुकेशन में इतना आगे बढ़ना है कि वो सब मुझे सीरियसली लेने लगे। तो आपका हर एक स्टूडेंट्स का मोटिवेशन अलग हो सकता है, रीजंस अलग हो सकते हैं हायर एजुकेशन में आने के लिए। तो वो सब आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना जरूरी है। एंड व्हेन यू आर, स्पेशली व्हेन यू आर अ फीमेल स्टूडेंट, तब आपके स्ट्रगल्स अलग है, आपके बहुत सारे चैलेंजेस है, जो जेंडर, हम लोग इसमें जेंडर देखना भी इम्पोर्टेंट है कि इजीली फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये सब भी आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना है, जिसकी हेल्प से एग्जामिनर को वो समझने में आसान हो कि क्यों वो आपको सिलेक्ट करे PhD के लिए, या फिर जो भी कोर्सेस है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर PhD इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होते हैं? तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट्स होते हैं, मार्कशीट्स होते हैं, उसी की कॉपी होती है, लेकिन उस पे ऊपर लिखा हुआ होता है ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। तो वो आपको आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, या फिर बैचलर्स किया है, वो आपको अपने अपने यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट लेने पड़ते हैं। ज्यादातर जहाँ तक मुझे पता है कि हमें सिर्फ मार्कशीट मिलता है और डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है जब हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपको तभी मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में, कि आपको ये चाहिए ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, तभी आपको वो मिलता है। उसका प्रोसेस वगैरह आप अपने अपने यूनिवर्सिटी में अलग होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जहां से आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है वहीं पे अप्लाई करके आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स लेने हैं। सो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स आर दी similar documents like degree mark sheets which you will get from your university. So the next document would be letter of reference. तो 2 letter of reference आपको देने होते हैं when you apply for PhD or higher education in foreign university. तो लेटर ऑफ रेफरेंस में आप ऐसे लोगों का लेटर ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं जिनके साथ आपने काम किया है, जिनके साथ आपने रिसर्च या थीसिस लिखा है। आपके मास्टर्स के गाइड से भी आप लेटर ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी बहुत एक चैलेंजिंग है लेटर ऑफ रेफरेंस लेना, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेसर भी नहीं चाहते हैं कि आप, मतलब उनके स्टूडेंट्स कहीं और चले जाए। तो ये बहुत ट्रिकी है, और तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किससे लेटर ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। या ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है कि जिनके साथ आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, किसी रिसर्च में काम किया है, तो उनका भी रिसर्च लेटर, जो लेटर ऑफ रेफरेंस है, वो वैलिड होता है। तो वो आपको 2 मिनिमम देने होते हैं जब आप कहीं पे अप्लाई कर रहे होते हैं। And then language scorecard, GRE, TOEFL, IELTS, PTE, these are different kinds of language exams.
तो इसका भी क्राइटेरिया या जो स्कोर है वो यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करता है या कंट्री वाइज भी वेरी करता है। जैसे कि जीआरई और ये सब जो कोर्स है, तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि यूएस में, हाँ, तो लैंग्वेज के बारे में हम लोग बाद में भी डिटेल में बात करेंगे। तो लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे आपको ये चाहिए होते हैं लैंग्वेज स्कोर कार्ड। तो डिफरेंट, I was preparing for TOEFL exam when I applied for my PhD. तो उसमें भी there are different sections in each exams. TOEFL में राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, तो ये 30-30 मिनट्स के एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, और आपको कुछ सेकंड्स दिए जाते हैं आंसर प्रिपेयर करने के लिए। तो टोफेल का जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई फील कि जो एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं वो हमें इजी लगता है, और जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमें डिफिकल्ट लगता है। तो ये जवाब भी देना कि कौन सा एग्जाम इजी है और कौन सा नहीं है, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ट्रिकी है। जिस तरह से जो भी हम प्रिपेयर करेंगे आपको हमेशा वो डिफिकल्ट लगेगा और दूसरा एग्जाम इजी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपका कैसा अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड होता है। And there are also section wise cut off in different languages. So TOEFL में जो होता है 4 सेक्शन, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, तो उसमें भी आउट ऑफ 30 यू नीड टू हैव मिनिमम 18 और 20 मार्क्स टू अप्लाई फॉर PhD। अब तो रीडिंग में अगर आपको इफ यू स्कोर्ड 22 marks in reading out of 30 and 15 marks in listening or speaking, then they will not accept your language scorecard. So you have to prepare all these sections: reading, writing, speaking, listening. मतलब सबको आपको इक्वली उसके लिए प्रिपेयर करना है और सारे सेक्शन को आपको इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि आप एक में ज्यादा स्कोर कर रहे हो, दूसरे में नहीं कर रहे हो, तब आपका वो स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब आप अप्लाई करते हैं। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाउ टू GRE जो एग्जाम होता है वो 320 मार्क्स का होता है। ज्यादातर साइंस फैकल्टी, साइंस या मैथमेटिक्स जिनका अच्छा है वो स्टूडेंट्स GRE प्रेफर करते हैं। TOEFL जो एग्जाम होता है वो 10 का स्केल के ऊपर होता है, मैक्सिमम 10, मिनिमम उनको 6.5 से ऊपर चाहिए होता है। IELTS का भी शायद 120 मार्क्स का शायद एग्जाम है IELTS। सॉरी, IELTS 10 का जो ग्रेड है स्केल उसका उतना होता है, और TOEFL का 120 मार्क्स का एग्जाम होता है। और PT एक और लैंग्वेज एग्जाम है। हर एक एग्जाम का जो प्रिपरेशन का क्राइटेरिया है वो भी अलग है और एग्जाम का पैटर्न भी अलग है। तो आपको वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या रिक्वायरमेंट है, उनको TOEFL चाहिए या GRE चाहिए, IELTS चाहिए, और उस हिसाब से फिर आपको लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना है। So now you have all your academic degree certificates, mark sheets, 10th onwards, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स है, ये आपको ये बेसिक मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है which you need when you are applying for higher education or PhD in foreign universities. So यहाँ तक अगर किसी को कुछ सवाल है तो हम लोग थोड़ा रुक के बात भी कर सकते हैं। राहुल, अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ, हाँ, या फिर हम ये बेटर रहेगा कि लास्ट में हम एक साथ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे भी ओके रहेंगे। ओके, तो ये यहाँ तक का डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है। So these are the basic documents which you, but not limited to, they may be they ask for other documents, but these are the basic documents which you should keep ready with yourself when you are thinking to apply for PhD or higher education in foreign university. And the next most important part could be scholarship. तो यहाँ तक
आपको डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी है एडमिशन के लिए, आपने यूनिवर्सिटी देख ली, आपने प्रोफेसर को अप्रोच किया, आपको एडमिशन भी मिल गया, बट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कुड बी हाउ टू फंड योर पीएचडी, क्योंकि फाइनेंसेस इम्पॉर्टेंट है। यू कैन सर्वाइव विदाउट स्कॉलरशिप इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे अकोमोडेशन है, ट्यूशन फीस है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीज है, आपका फूड, ये सब चीजें, हॉस्टल्स है। तो उसके लिए आपको यू मस्ट नीड टू हैव नो स्कॉलरशिप और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। और तो ये कैसे ढूंढना है, ये हम थोड़ा सा देखेंगे क्या प्रोसेस है। तो व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर फंडिंग, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू, सर्च फॉर फंडिंग एट द यूनिवर्सिटीज यू आर अप्लाई विलिंग टू अप्लाई। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज नो दे हैव देयर ओन फंडिंग, जैसे कि ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, कोलंबिया है, जर्मनी में भी, इवन इन माय यूनिवर्सिटी दे हैव फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स। तो ये पहले आपको देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें फंडिंग है क्या। सो दैट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। सो स्टार्ट विथ फंडिंग, सर्चिंग फंडिंग एट योर यूनिवर्सिटी। अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कॉलरशिप्स है, फेलोशिप्स है, वो आप देख सकते हैं, तो जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी फंडिंग नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप कुड बी सर्च स्कॉलरशिप्स इन योर नो स्टेट, because in Maharashtra they have different scholarships for PhD in foreign countries. I don't have no idea about the other state governments, but you should start searching. If there are no scholarship at the central level, you can start searching at the state government level. I think Kerala or Tamil Nadu, they might be having some scholarship, but I have no idea. तो जो भी स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से हैं एक्सेप्ट महाराष्ट्र, तो उनको आपको अपने स्टेट में भी देखना है कि कोई ऐसे फॉरेन स्कॉलरशिप्स है क्या। अगर वो भी वर्कआउट नहीं होता है, देन यू कैन अप्रोच प्राइवेट एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका लिस्ट भी आगे मैंने दिया हुआ है। तो उनको भी आप देख सकते हैं कि वो कोई फाइनेंस या फंडिंग प्रोवाइड करते हैं क्या। अगर वो भी नहीं वर्कआउट होता है तो देर आर सर्टेन नो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हब्स वेयर टाटा ट्रस्ट है, तो जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन लेटर एंड एवरीथिंग। अगर वो भी वर्कआउट नहीं होता है तो पॉलिटिकल लीडर अगर आपके एरिया में है, अगर उनसे अप्रोच करके कुछ हो सकता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन बाटी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, तो वहां पे देर वॉज दिस लिटिल गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्र। तो वो चेस खेलने में बहुत ज्यादा होशियार थी, और चेस खेलने के लिए उसे फॉरेन में भेजना था उसके पेरेंट्स को, तो उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था उसे फॉरेन भेजने के लिए, चेस खेलने के लिए। तो बहुत बहुत होशियार ब्रिलियंट लड़की थी, और वो बाटी में एक बार आए विजिट करने के लिए, और वहां पे मुझे नाम याद नहीं है पॉलिटिकल लीडर वो जो थे, तो उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे बहुत होनहार स्टूडेंट है और वो चेस में वो बहुत होशियार है, तो उसके लिए आपको मतलब कुछ करना चाहिए। जो भी सिचुएशन थी डायरेक्टर ने उनको बताया, तो पॉलिटिकल लीडर जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उसका पूरा शादी तक का खर्चा गवर्नमेंट करेगी। अब वो मुझे नहीं पता वो अभी तक उन्होंने किया है या नहीं, लेकिन द पॉजिटिव थिंग इज कि वो बाद में फिर न्यूज़पेपर में वगैरह सबने लिख दिया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज थी कि एक जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने हेल्प किया वो स्टूडेंट को। और मुझे लगता है ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के पास भी कुछ स्पेशल पावर या कुछ प्रोविजंस होते हैं जिससे वो स्टूडेंट्स को मदद करते हैं। तो अगर ऊपर का कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आप पॉलिटिकल लीडर्स को भी आपके एरिया में उनको अप्रोच कर सकते हैं। और अगर ये इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है देन यू कैन गो फॉर क्राउड फंडिंग। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, तो वो भी आप कर सकते हैं।
And if nothing is working, work out from all these options, then you can go for education loan, which I would not recommend, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी हो जाता है कि एक तो आपको फॉरेन में आना है, बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, और ऊपर से एजुकेशन लोन, ये प्रेशर, अगर आप कैपेबल हो वो सब करने के लिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज आई पर्सनली डोंट रिकमेंड कि आप एजुकेशन लेके फिर फॉरेन में जाके कुछ करो. And then these are different common scholarship which are available for all the students. Erasmus Mundus scholarship है जो कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप कुछ कोर्सेज कर रहे हैं तो उसके लिए दी जाती है. फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, QS लीडरशिप स्कॉलरशिप है. We don't have no time to go into detail of each of these scholarship, but I would ask students to know, just note it down, or maybe I can share my presentation after this session so that you can get an idea about different types of scholarship which are available in Europe or in other countries. And there are also some scholarship which are specially for girl students, like Lady Mehra Bai Tata Trust Fellowship, which is only for girl students. और टाटा ट्रस्ट भी मुझे जहाँ तक पता है कि उनका भी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए वो लोग स्कॉलरशिप देते हैं. दैट स्कॉलरशिप यूरोप में है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. अब ईच ऑफ दी स्कॉलरशिप्स हैव डिफरेंट क्राइटेरिया एंड डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको सुटेबल है. वेबसाइट पे जाके the basic process is to go on Google and check what are the criteria, requirement, process, ये सब. और अगर उसमें कुछ if you need any help, you can always ask Rahul or me. And then these are some fully funded PhD programs in Germany, because I'm doing my PhD in Germany, and that's why I thought it would be helpful for our student to just share the links. So these are international doctoral program database. So there are two types of PhD programs available in Germany. दो टाइप के PhD programs जर्मनी में होते हैं. फर्स्ट इज जो स्ट्रक्चर्ड PhD प्रोग्राम, जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग PhD है, कि यू विल गेट अ प्रोफेसर विद वन रिसर्च टॉपिक, और उसमें आप PhD कर रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग PhD है. और दूसरा एक होता है जिसमें ग्रुप में यूनिवर्सिटी प्रपोज अ टॉपिक, और उसमें वो ग्रुप में कुछ लोगों को हायर करते हैं. जैसे कि साइंस फील्ड में अगर कोई, या फिर इवन इन सोशियोलॉजी और सोशल साइंसेस, एक कोई टॉपिक होता है जिसमें वो लोग आपको एज ए एम्प्लॉय कंसिडर करते हैं, और जिसमें आपको उनके दिए हुए टॉपिक के ऊपर काम करना होता है. जैसे कि स्ट्रक्चर्ड PhD में हम लोग क्या करते हैं, हम रिसर्च एक टॉपिक प्रपोज करते हैं जिसके ऊपर हम लोग 3 साल 4 साल रिसर्च करते हैं डिटेल में, इन डेप्थ. और ये जो दूसरा होता है जिसमें आप दे कंसिडर यू एज एन एम्प्लॉय ऑफ योर यूनिवर्सिटी, और उस एक टॉपिक के ऊपर और भी 3-4 लोग काम कर रहे होते हैं. तो उसमें आपको और वो प्रोजेक्ट का एक पार्ट के थ्रू आपको फिर वो PhD अवार्ड करते हैं. तो ये एक मतलब, दिस इज ऑल्सो आवर स्टूडेंट, आई ऑल्सो एनकरेज आवर स्टूडेंट्स टू look for these kind of opportunities where there is no need to provide or prepare research proposal. You just need to have certain research skills, literature, for example, how to do literature review, how to frame research questions, how to collect data, how to design methodology. तो ये सब जो basic questions skills अगर आपके पास है, तो आप इस टाइप के PhD प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये भी एक जर्मनी में मुझे ज्यादातर पता है, आई डोंट हैव क्लियर आइडिया अबाउट अदर कंट्री, लेकिन जर्मनी में ऐसा भी प्रोसेस है जिसमें यूनिवर्सिटी के टॉपिक के ऊपर आपको काम करना होता है. तो ये कुछ फुल्ली फंडेड PhD प्रोग्राम्स है, इंटरनेशनल डॉक्टर प्रोग्राम्स एट यूनिवर्सिटी. दीज आर सम websites which I will share with you, Rahul, later, so that you can share with students. And then
what are the different scholarship at the central level. So national overseas scholarship by the Ministry of Social Justice and Empowerment, जो कि मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को अभी पता है, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने सोशल साइंसेस के लिए ये बंद कर दिया है, सोशियोलॉजी या सोशल साइंसेस के लिए। तो वो क्राइटेरिया हर साल वो कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा। उसके बाद for scheduled caste students, there is this scholarship by the Ministry of Social Justice and Special Assistance, Government of Maharashtra. तो ये उसका वेबसाइट है, आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं या बाद में इसमें देख सकते हैं। लेकिन एंड देन शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी देयर इज दिस स्कॉलरशिप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि फुल्ली फंडेड है फॉर स्टूडेंट दोज हु आर कमिंग फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, एंड दिस इज एट द सेंट्रल लेवल. सो दीज आर टू वेबसाइट्स where you will get the detailed idea about the funding, and this is also fully funded scholarship for denotified, nomadic, semi-nomadic tribe, भटके विमुक्त communities ज्या आहेत, विमुक्त घुमंतू कम्युनिटीज जो है महाराष्ट्र में ही ऐसा प्रोविजन है, सिर्फ अदर स्टेट में बीजेएनटी के स्टूडेंट्स है, लोग भी है, लेकिन ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है. तो सिर्फ महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे बीजेएनटी के लिए पहले वो लोग 10 स्टूडेंट्स के लिए देते थे स्कॉलरशिप्स, लेकिन अभी उन्होंने इस साल 50 स्टूडेंट्स वहां पे कर दिए. तो जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशली बैकवर्ड क्लास एंड विमुक्त नोमैडिक या ट्राइब या डिनोटिफाइड ट्राइब्स कैटेगरी में आते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इसमें भी जो है क्राइटेरिया क्या है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विद इन 200, जो कि हमने पहले देखा कि क्या है क्यूएस रैंकिंग. ठीक है, तो उसमें क्यूएस रैंकिंग में अगर पहले 200 में वर्ल्ड में अगर वो लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी है, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. And then there is also this Dr. Ambedkar Central Scheme of Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies for other backward classes. So this is a type of loan, education loan, where you need to apply at the Ministry of Social Justice. लेकिन इसमें Ministry of Social Justice and Empowerment will help you to get this education loan. तो इसका भी क्राइटेरिया अलग होगा, प्रोसेस अलग होगी. एंड देयर इज ऑल्सो दिस स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बाय द हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. दिस स्कॉलरशिप इज फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स, दोज हु आर नॉट कमिंग इन नो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एनी अदर कैटेगरी, those students can apply for this scholarship. और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए भी, जैसे कि हमने देखा कि क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना कम है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में भी, तो उनके लिए भी ये पढ़ो परदेश करके एक स्कीम है, स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन्स फॉर ओवरसीज स्टडीज फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, एंड दिस स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड अगर स्टूडेंट्स दोज हु आर फिजिकली चैलेंज्ड, तो उनके लिए भी स्पेशल स्कॉलरशिप है. ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है इसके बारे में. नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो इसमें भी वो 20 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप वो हर साल देते हैं. तो अगर आपके कोई दोस्त हैं जो फिजिकली चैलेंज है, तो उनको भी आप ये रेफर कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे कोई स्कॉलरशिप है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं. लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा कि कंट्री वाइज, सो यहाँ तक ये है फंडिंग, जो कि डिफरेंट फंडिंग्स है, कैटेगरी वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं. हर एक स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी लेकिन डिफरेंट है, लेकिन बेसिक जो क्राइटेरिया है हर एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, आपका जो लास्ट डिग्री होगा, जैसे मास्टर्स या बैचलर्स, उसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए. तो आपको ये ध्यान में रखना है व्हेन यू आर डूइंग योर बैचलर्स और मास्टर्स,
you should have minimum 60% marks in your final डिग्री एग्जामिनेशन. तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया मुझे लगता है कि सारे स्कॉलरशिप्स में ये होगा. एंड कुछ इनकम क्राइटेरिया अलग अलग स्कॉलरशिप वाइज डिफरेंट होगा, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट होगा, लेकिन ये बेसिक क्राइटेरिया हर जगह सेम ही होगा कि मिनिमम 60% आपके होने चाहिए. तो आपको वो भी सो नाउ इफ यू आर इन योर मास्टर्स और बैचलर, you should try hard to get at least minimum 60% in your final exam. तो यहाँ तक ये हो गया स्कॉलरशिप. उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट और ये जो प्रोसेस है एडमिशन एंड स्कॉलरशिप, दिस शुड गो साइमल्टेनियसली. you need to apply for admission, but at the same time you should also try to apply for scholarship, because this both two things should go parallelly. अदरवाइज आपको क्या होगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं होगा, तो आप अपना जो पीएचडी है या जो भी हायर एजुकेशन डिग्री आप ज्वाइन नहीं कर सकते. तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप एडमिशन के लिए जैसे अप्लाई कर रहे हैं विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, रिसर्च प्रपोजल, सीवी, आपका ट्रांसक्रिप्ट्स, उसके साथ आपको स्कॉलरशिप भी ढूंढना है. दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, नहीं तो फिर एक चीज आपको मिल जाएगी, दूसरी में लेट हो जाएगा, फिर आपका 1 साल उसमें वेस्ट हो जाएगा. तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों चीजों के लिए आपको साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है, प्रिपेयर करना है. यू शुड अप्लाई फॉर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप साइमल्टेनियसली, एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स at the same time, so that if you get admission and if you have the scholarship at the same time, you can join your PhD. And then the third important thing is language requirement. क्योंकि सब जगह आपका एडमिशन भी हो गया, आपको स्कॉलरशिप भी मिल गई, लेकिन कभी कभी वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं. बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, यू शुड हैव अनकंडीशनल ऑफर लेटर. अब कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ऑफर लेटर में क्या डिफरेंस है कि कंडीशनल ऑफर लेटर मतलब कि आपको वो एडमिशन तो दे देंगे. से फॉर एग्जांपल जर्मनी में मुझे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, लेकिन वो कंडीशनल है. तो कंडीशन क्या है कि मुझे टोफेल या फिर आईएलटीएस का जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो पहले सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद वो मुझे अनकंडीशनल ऑफर लेटर देंगे. तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप. तो अनकंडीशनल ऑफर ज्यादातर कंडीशंस यही होता है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. तो इफ यू आर अप्लाइंग इन एनी यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जीआरई मस्ट है. लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे भी है जो टोफेल, आईएलटीएस या फिर पीटी एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से. एंड इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दे एक्सेप्ट टोफेल, पीटी और आईएलटीएस एग्जाम. लेकिन लास्ट 2 साल का जो एक्सपीरियंस कुछ मेरे दोस्तों को या स्टूडेंट्स का रहा है कि उन्होंने कोविड के बाद उन्होंने लैंग्वेज का क्राइटेरिया हटा दिया था कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में. लेकिन आपको वो भी देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ऐसा है, और उस हिसाब से यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज लैंग्वेज एग्जाम्स. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज लैंग्वेज एग्जाम्स, देयर आर some institutes or organizations or platforms, those who help students to prepare for these language exams. तो फर्स्ट तो डिजिटल नालंदा में भी क्लासेस वगैरह लैंग्वेज के लिए वो लोग प्रिपेयर करते हैं. एम आई राइट राहुल? लैंग्वेजेस के लिए भी अभी नहीं है, अभी स्टार्ट करने का प्लान है, तो इसके लिए मेंटर्स वगैरह से बात चल रहा है एक्चुअली. बट दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. डिजिटल नालंदा प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हैं कि लैंग्वेजेस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में गाइड किया जाता है. एंड द सेकंड ऑप्शन कुड बी एकलव्य, जो अभी महाराष्ट्र में भी एकलव्य ग्रुप है, वो भी अलग अलग सेशंस वगैरह लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आप देख सकते हैं. And then there is also this Ambedkar International Mission. This organization was founded in Kuala Lumpur, Malaysia
in April 1994 by NRI Ambedkarites. तो अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन ये जो है, तो ये 80% डिस्काउंट देते हैं कोचिंग फीस, लेकिन इफ यू आर एलिजिबल, तो इफ यू आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, तभी वो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक डिस्काउंट लेटर देते हैं। वहां पे आपको 80% फीस आपको नहीं भरनी पड़ती है, सिर्फ 20% फीस आपको पे करनी होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप एलिजिबल है उनके क्राइटेरिया में, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम SC, ST, VJNT, OBC एंड माइनॉरिटी बैकग्राउंड. And there is also this global empowerment network. You can always find their videos on YouTube where they teach about GRE, TOEFL, IELTS. They also have center in Nagpur and Amravati in Maharashtra. So these are 4 different supporting coaching institutes where you can approach to learn about how to apply for language exams. So what will be the summary now? So this is the reference. This I found on Google. So with all these documents, हमारे पास सब documents है अभी, admission के, scholarships के letters है, सब कुछ है। तो आपका final एक basic process क्या होगा, इसमें हम quickly थोड़ा सा overlook करेंगे कि research and shortlist the course and university. Now we know how to shortlist course and university according to QS World Ranking. We also know that how to approach professor. Literature के review through हमें नाम पता चलते हैं, professor जो काम कर रहे हैं उस topic के ऊपर, उनको हम लोग shortlist कर सकते हैं। University QS World Ranking के हिसाब से shortlist कर सकते हैं। आपका टॉपिक, यूनिवर्सिटी कोर्स फाइनल हो गया, प्रोफेसर फाइनल हो गया, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर TOEFL, IELTS और GRE एग्जाम. And you should see, it's a time taking process, so you need to have patience and you should keep trying. So if you start in July, अगर जुलाई में आप शुरू करते हैं ये सब चीजें, आपको the first thing you should do is you should plan what you want to do, when you want to do, and what are the important things that you need to consider while applying for PhD in foreign university. So these are just pointers कि रिसर्च प्रपोजल हो गया, कोर्स हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, आपने फिर यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर TOEFL और IELTS एग्जाम, उसके बाद आपने फाइनलाइज किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको अप्लाई करना है. साइमल्टेनियसली यू ऑल्सो नीड टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप. once you have finalized your university and scholarship, उसके बाद आपको एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है. Start preparing for your statement of purpose, ask for recommendation letters. तो ये भी एक प्रोसेस है. आपने अपना SOP लिख दिया, रिकमेंडेशन लेटर्स अगर आपको चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा फर्स्ट सेक्शन में कि डॉक्यूमेंट्स में रिकमेंडेशन लेटर्स भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी आपको टाइम देना होता है जिनसे आप रिकमेंडेशन लेटर लेना चाहते हैं, है ना. तो ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको कब अपने प्रोफेसर या जिनके साथ आपने काम किया है उनको अप्रोच करना है. उनको भी आपको टाइम देना होता है कि मिनिमम 1 मंथ एक आप कंसिडर करके चलो कि एक मैक्सिमम 1 मंथ आप सामने वाला लेगा आपको रिकमेंडेशन लेटर देने में, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है. And now you are ready with all your resume, SOP, letter of reference, transcripts, financial documents, certificates to be sent to the university. Start applying to universities through their website. So there are 2 ways of applying at the university. First, you can directly apply through their website. जो भी जैसे कि गोएथे यूनिवर्सिटी है, उनका वेबसाइट है, उस पे जाके एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने ढूंढा और वहां पे मैंने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया. सो दिस कुड बी वन प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस कुड बी कि आपने जो प्रोफेसर वहां पे आपने देखे जिनके साथ आपको काम करना है, आप उनको पहले लिखेंगे, उनको आप बताएंगे कि आपको किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, और जब उनकी तरफ से आपको एक लेटर मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस लेटर, कि वो रेडी है आपको गाइड करने के लिए PhD के लिए, तो वो लेटर मिलने के बाद देन यू formally apply at the university. So these are 2 different process through which you can apply for your PhD.
first through the university website, and second through professor you will get the letter, and then you will apply through the formal application process. The next step could be you should have now apply, मतलब अभी आपने अप्लाई कर दिया है, यू विल स्टार्ट रिसीविंग एडमिशन लेटर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. आपने ये दो प्रोसेस में से जो भी आपके लिए फिजिबल है आप उससे अप्लाई करेंगे. उसके बाद आपको कंडीशनल या अनकंडीशनल जो भी लेटर मिलेगा उसके साथ यू शुड नो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर योर वीजा, इंटरव्यू, गेट रेडी फाइनेंशियली, लाइक योर स्कॉलरशिप सब मिल गया, वीजा मिल गया. वीजा का इंटरव्यू के लिए अभी आप जा रहे हैं और आइडियली अभी आपको सब कुछ प्रोसेस हो गया है, एडमिशन हो गया है, और अभी आपको बस डिसाइड करना है कि आपको जाना कब है ना. तो ये अभी तो हम थियोरेटिकली पहुंच गए यूनिवर्सिटी में और आप फॉरेन में भी पहुंच गए पीएचडी के लिए. तो ये प्रोसेस है ऐसे वन बाय वन. ये लगता है इजी है लेकिन ये इतना इजी नहीं है. इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड कॉन्स्टेंट, आपको उसके पीछे भागना पड़ता है कि नहीं ये एक के बाद ये प्रोसेस आपको धीरे धीरे कंप्लीट करने होते हैं. But by giving my own example, coming from a very rural vernacular medium background, if I can do it, I think anybody can do it. तो ये एक समरी है ये पूरा प्रोसेस का. अब ये पूरे प्रोसेस में चैलेंजेस क्या है और लर्निंग्स क्या है. तो बिफोर एडमिशन, तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हमने शुरू किया रिसर्च टॉपिक से लेकर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना, प्रोफेसर्स को अप्रोच करना, यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढना है वो भी हमने देखा. सारे डॉक्यूमेंट के साथ फिर जो दो तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट या थ्रू प्रोफेसर, ये भी हमने देखा. और उसके बाद एडमिशन लेटर मिलने के बाद अगर आपको स्कॉलरशिप भी एट द सेम टाइम मिलता है तो आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं. तो इन सब में चैलेंजेस क्या है. तो बिफोर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन, डॉक्यूमेंटेशन, स्कॉलरशिप, लैंग्वेज, तो at every level you will face different types of challenges. तो before admission आपके challenges क्या होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने देखे, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च टॉपिक फाइनल करना, मेथड्स फाइनल करना, पूरा लिखना, एसओपी वगैरह लिखना, एडमिशन से पहले की जो प्रोसेस है उसमें भी ये बहुत चैलेंजिंग है. सिंस वी डोंट हैव ये जो जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में दे हैव देयर ओन लैंग्वेज टिल द पीएचडी. लाइक इन जर्मनी दे हैव जर्मन लैंग्वेज. तो जब आप अपनी खुद की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है ये सब चीजें करना. लेकिन जो कि स्टूडेंट्स महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, अदर डिफरेंट स्टेट से आते हैं, तो उनका एक चैलेंज ये भी होता है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज अलग होती है जिसमें आपने 12th तक पढ़ाई की. उसके बाद फिर आपको अडॉप्ट करना पड़ता है इंग्लिश में, और उसके बाद जर्मनी जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स भी मांगते हैं, जर्मन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेट. लेकिन उससे रेस्ट्रिक्ट तो वो नहीं करते हैं. लेकिन दिस कुड बी वन ऑफ द चैलेंज कि आपको शायद जर्मन भी सीखना पड़े, फ्रेंच भी सीखना पड़े. तो ये डिफरेंट चैलेंजेस है एडमिशन के पहले भी. डॉक्यूमेंटेशन का भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स और ये सब चीजें रीजनल लेवल पे वो मराठी में मिलते हैं या फिर बिहार में या फिर अदर स्टेट में. रीजनल उनका जो स्टेट का लैंग्वेज होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, उसमें ये हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं. जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बाद में आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ता है. लेकिन जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं एट द सेंट्रल लेवल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देने होते हैं. सो दिस कुड बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मेरे केस में मैंने ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स खुद से ट्रांसलेट करके फिर कुछ डिपार्टमेंट्स को दिए थे, फिर उन्होंने उसके ऊपर प्रोसेस करके वापस मुझे दिए. क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी शायद ऐसे गाइडलाइंस नहीं मिलते हैं कि उनको वो इंग्लिश में
देना जरूरी है। तो ये कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। एडमिशन के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, डिफरेंट कंट्रीज का वीजा के लिए फीस अलग होता है। तो इफ यू आर फाइनेंशियली साउंड देन यू कैन अफोर्ड टू अप्लाई फॉर वीजा, बट इफ नॉट देन आपको वो भी थोड़ा देखना पड़ता है कि कैसे फाइनेंसेस भी आपको मैनेज करने हैं। उसके बाद एडमिशन स्कॉलरशिप के टाइम, जैसे मैंने कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, फंडिंग, ये सब चीजें हैं। और लेकिन लैंग्वेज का जैसे मैंने बोला, और कल्चरल डिफरेंसेस, मतलब फॉरेन कंट्री में आने के बाद भी वो एक डिफरेंट चैलेंजेस है। लेकिन इन सब में से लर्निंग्स मेरी यही है कि यू शुड प्लान एवरीथिंग इन वेल इन एडवांस। यू शुड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, एंड इफ यू आर फर्म ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स कि आपको क्या करना है, तो आप मुझे लगता है इजीली सारे चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। Things which are important but not paid much attention to are mental health and support from your family and friends. तो ये सारे प्रोसेस में, which is very time taking process, your mental health is also very important. If you are mentally not sound, then you should stop and take some time, think properly कि आपको क्या करना है। तो ये भी इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर कुछ पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे होंगे, तो उनसे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि फैमिली या फिर फ्रेंड्स जो है, वो एक दूसरे का सपोर्ट होना भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते कि मेंटल हेल्थ और ये सब चीजें उनको एक टैबू की तरह भी देखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है व्हेन यू आर अप्लाइंग for higher education, especially when you are coming from vernacular rural background. So at the end, I would say, I will also not say that when you are coming in a foreign university, it's a big achievement, but at the same time, you should also consider it's a big achievement, because when you are coming from certain socio-economic background with so many difficulties, and still you are willing to go for higher education, then I think it's big achievement. And I would definitely recommend all the students who are listening this session that you should apply for higher education in foreign university. I think this last quote I have written few days back on my Instagram, that though it is difficult to define success or achievement, for me success is overcoming all the mental blocks, insecurities and social barriers that are responsible for reducing your self-confidence and way of living. It is more about challenging the multiple restrictions imposed on you by social institutions to control your behavior and to find your path. तो मुझे लगता है कि सक्सेस क्या है, तो आप आज जहाँ पे हैं वहां से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो कंपटीशन है आपके खुद के साथ है, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज है उनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, सही मायने में वही सक्सेस है। और आप ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली आपका जो भी गोल होगा लाइफ में वो अचीव कर पाएंगे। So I'll stop here by referring to Savitribai Phule's quote that knowledge always demands increase. It is like fire which must first be kindled by some external agent, but will afterward always propagate itself. इसका मतलब है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो हमेशा एक फायर की तरह कोई आपको थोड़ा सा पुश कर सकता है, लेकिन आपको खुद को वो कॉन्स्टेंटली परस्यू करना जरूरी है। तो I will end here, Rahul, and let's have some questions. Thank you, Deepali. Thank you I very much. hope I hope I tried to answer most of the answers. Yes, you have covered very important things already. So now I'll request our students to ask your question. If you have any question or query, you can write in the chat box, or you can raise your hand, so I'll unmute you, so you will be able to directly ask.
I think Yes, Prashant. Prashant. Yes, Prashant, I'm going to unmute you. Yes, you can unmute and ask your question, Prashant. Uh, Thank you, Deepali, for the wonderful lecture. And it's very motivating. And I feel very, very motivated. Thank And you. I, Mhm. yeah, it boosts my self confidence now. So I don't have any questions regarding things, but I Mhm. have questions regarding because I have on one question on IELTS preparation because I want to apply for Hungary stipendium, and they are asking IELTS, and I haven't gone through any coaching or something. Mhm. So would be nice. You said already like the important sources for IELTS preparation. I have a doubt whether if I within a month's time I Uh, Within a month time, and then you're gone, Prasad. Yeah. within a month's time Uh-huh. can I prepare and give a test? Yeah, Attempt test. definitely you can prepare, Prashant. So this is. Do they have any criteria that of marks that how much they Six, require? six. 6. Yeah, So in IELTS exam, you are saying? So yeah. IELTS exam have 4 section. Do you have basic idea about the exam? You have, I right? know about the basic. Yeah, So it's an online exam, right? So if you yeah, prepare, if you practice every day for minimum 2 hours, I think you will be easily able to crack the exam. But this is what I feel. You need yeah, to know yeah, constantly practice every day on YouTube. There are also various videos available, and you need to, like, they give certain seconds to prepare for your answer, right? So yeah, you start developing that habit for 1 month, maybe that read or listen continuously some videos and try to answer within 30 seconds. And if you prepared every day till the no time of your exam, I'm definitely sure that you will be able to crack it. But it yeah, depends on yeah. how Thank you prepare, right? yeah, And be careful that no, you prepare for all the sections. yeah, Because in certain case, if you get 6 in writing and 4 in speaking or listening, then they won't accept you. Or yeah, maybe at Hungary, if they accept all over score, then it would be great. But let's go and check again that if they have any section wise cutoff for IELTS exam. okay, okay. Thank you. Yeah. Yeah, And thank you. yeah, try to find videos on YouTube and practice every day continuously. And also ask them whether they have any deadline to provide this certificate. Because Yeah, sometimes, thank you. even if sometimes they give you admission, and after certain months, you need to provide this certificate. So Yeah, just check that. yeah, yeah. Yeah. Thank you. Yeah, All the best, Prashant. yeah. Thank you. Yeah. Okay, so we have 2 more. So Bizel, I'm going to unmute you. You can ask your question. Balaji, sorry. Balaji. Balaji Shinde. Hello. Yeah. Am I audible, Rahul? Yes, 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 yes. Thank you so much. And good evening, Deepali ma'am. I'm Balaji from Maharashtra. Good And evening, Balaji. How are you? yeah, yeah, I'm good. I'm good. What about you? Mhm. I'm fine. Yeah. Thank you. Thank you so much for this wonderful session. And ma'am, I have completed my master degree from Tata Institute of Social Sciences, Sulbapur campus. Mm-hmm. And I am a student with person. I am person with disability. So Mm-hmm. I'm locomotor. So Mm-hmm. I want to just ask to you that uh, do you have what there are two questions from my side. The first Mm-hmm. question is that what are the opportunities for students with any disabilities?
for abroad education. And the second question is that, so do you have any idea about which are the good universities for disability studies while applying PhD or the master's degree? Yeah, that's it. Okay. Thank you so much for this opportunity. Thank you, Balaji, for your question. I think I don't have specific idea about what are the opportunities, but I will definitely get back to you on this question. And if you have attended my entire presentation, there is also this scholarship which is available for students with no physically challenged, and which is provided by the government of India, overseas scholarship. So I would encourage you to check the details of that scholarship. And this first thing you said, that what are the opportunities? So it depends on on which subject you are willing to do your PhD. So if you give me some idea about your research topic, and maybe in which topic you want to pursue your PhD or higher education, then maybe we can discuss more. Hello? I think it's Balaji, you can unmute. Well, Hello. Yeah. Thank you so much. So I want to go for the disability studies, for the health education. okay. In disability studies. Yeah, So, in disability studies particular, and I'm working with Giftable Foundation also. So we having CSR project. So since last 2 years, so I'm working in a social sector also, in disability domain. so Balaji, give me some time to find, Sure, yeah. courses, and you can take, or you can just write me on my email ID, or maybe I can sure. Rahul. Yes. You can share. Yes, you can talk me later. Please Sure. write me. I'll try to respond, and Sure. if required, we can have another round of meeting or something to find, right? Yeah, sure. Yeah. We'll Thank you, Balaji. take your email ID and document. Yes, please do. I'll Thank you so respond. much. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yes. So before taking question from Sneha, I want to say one thing to our YouTube audience. So those who are watching on us on YouTube, so you guys also can write your question in chat box, or in chat box. So we will take your question also. So first we will take a question from our students who are joining in us on Zoom. Then we will take your question. So Sneha, I'm going to unmute you. You can ask your question. Sneha, you are audible, but I think you are not. Sneha, your voice is not clear. We are not able to hear you. Hello, ma'am. Yes. Hi, Sneha. Ma'am, I'm currently doing the research methodology class at the Digital Nalanda. And our sir said us to prepare a research proposal. So he given us a topic, and he told how you write your research proposal in the format like introduction, methods, results, timeline, and budgets. So our topic is heat stroke when we face in tropical summers. And what were the traditional ways people were practicing to save themselves. So my question for you is, we know the format, and I just want to ask you how I collect the data for preparing this topic, which books I should read, or
any websites do you know where we can take data to prepare for our proposals? So your topic is heat stroke in the in what? In tropical summer. So, Hello, Sneha. is that Heat stroke in what? in Vardha, that summers are very in summers temperature goes very high. Yes, How yes, I know. so how traditional methods were people practicing to protect themselves from heat stroke? This is very interesting topic, Sneha. So what you can do is you should, as you said, you know the process and know what are the points needs to be covered. But I would suggest that for data collection, you should need to write the method or you need to collect the data. What method will be done for preparing this topic? What should I read? What should you read? So maybe you should start with these basic concepts like heat stroke. If you search on Google, or Shodh Ganga is the research website, right? Shodh Ganga, where if you just write this topic, the entire topic, you will get certain theses which are related with the topic, or you might get some research article which are related with the climate change or tropical summer or heat stroke. You might not get the specific articles about Vardha, but as you said that heat stroke is the concept, right? Heat stroke, tropical summer, climate change, these are the concepts about which you can find certain literature, and then you can relate it with Vardha. Say for example, few कि कुछ सालों पहले कैसे what were the different methods they were using to protect themselves for during summer. तो एक और चीज ये भी कर सकते हैं कि you can go to Vardha and you can start interacting with people. So sometimes it happens when you don't have any literature or data, you should go into the field, you interact with people, collect some data, you come back and you start searching literature which is related with the themes which are coming from your data. So this could be two different ways of finding literature. Okay, Sneha, we are not able to hear you clearly. It will be good if you can write your question in our chat box. No, but I got her question that she Okay. has a topic. She wants to collect the data, but she wants to know how to find literature and know what data she should collect. But these could be the two different options. You can also write to me, Sneha, if you want to know to discuss more. Yes, ma'am. I would love to connect with you. Now But your voice you is get my point, clear. what I said? Yes. Oh, so sorry. No, it's okay. No, It's that's fine. okay. That's okay. We were not able to hear what you are saying after asking the question. So this could be two different ways, Sneha. You should pick up some themes, major themes, and start searching on Google. Some articles on Shodh Ganga, and or the second option could be go into the field, talk to people, collect some data, and from those data you will get certain themes. तो उसके बाद आप फिर ढूंढ सकते हैं उससे रिलेटेड लिटरेचर. और एक Sneha, please write your question in chat box. Actually, we are not able to hear you, and Vaisali's voice is also not clear due to your microphone. No problem. I will write in chat box. Thank you for that. Please. All the best, Sneha. जब तक स्नेहा
हाँ, चैट बॉक्स वीडियो में में टाइप डालो। करते हैं, तो तब तक मैं ये जूम से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो शिवाजी इज आस्किंग, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ औरंगाबाद, कैन आई गेट एडमिशंस in admission in what? Shivaji, your question is not clear to us actually, what you are want to say. So he might be asking that he has completed His graduation and now graduation, yes, he's he is looking for completed his graduation. post-graduation maybe. I think. So yes, definitely. If you prepare all the documents and your research proposal and everything, so he might be, yeah, anybody can try. Or maybe he should connect with you, Rahul, after this session. Yes. You can mail us on our Nalanda email ID, so we will answer your question or queries. Yeah, this. Yeah. So next question is Arjun Ghavre. This question is from Arjun Ghavre. He's saying, my English is weak. How to prepare about GRE? I have to study abroad in law stream. In Law. Okay. So Arjun, I would I see. I know a person who has completed her law in India, but after coming to Germany, okay. So there could be two possibility. If you want to do research in law, then you can apply. But if you want to pursue a degree in law, then it might be different from what you have studied in India. Because the German law is different from Indian constitution and Indian law. So what is his question again? Some degree in law? He's saying his English is weak. He want to prepare for GRE and want to pursue his career in law stream. So language should not be like it. It could be challenging, Arjun. But if you want to pursue law in Germany, then you need to learn German language as well. Because then it would make sense if you are studying law in Germany. So you need to learn English as well as German language. I don't know if I'm able to answer his question, but GRE, I think GRE is not required when you are applying in law, maybe, but he can prepare for IELTS or TOEFL exam for law admission. Yes. Or you can go to the university website. You can check their eligibility criteria. It is required or not. Yes, and even if your language is not good, that is not a problem. It's just a matter of no practice. Because I myself come from Marathi background. तर मी पण मराठीमध्येच शिकली आहे 10वी-12वी पर्यंत. 11वी-12वीला मला काहीच कळत नव्हतं. 6 महिने इंग्लिश. त्यामुळे हे खूप नॉमिनल आहे अर्जुन, आणि मला वाटतं की तू करू शकतो. आणि मराठीत जरी आपण शिकत असलो तरी हळूहळू ग्रॅज्युएशन मध्ये आपल्याला थोडी इंग्लिश यायला लागते, बरोबर. आणि हळूहळू प्रॅक्टिस करून आपण हे सगळं शिकू शकतो. ओके, पण मी मराठी भाषेतच शिकलो आहे. अच्छा, तरी पण काही हरकत नाही. मराठीत जरी शिकलाय तरी तुला कॉन्सेप्ट, तुझ्या सब्जेक्टची क्लॅरिटी आहे ना, तर मग थोडंसं इंग्लिश वरती मेहनत घ्यायला लागेल. रोज इंग्लिशचे 50-100 शब्द पाठ करायचे, किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण लँग्वेज शिकू शकतो, बरोबर. लोकांशी इंटरॅक्ट करून, किंवा इंग्लिश न्यूजपेपर वाचून, इंग्लिश न्यूज चॅनल्स रेग्युलरली जरी तू बघितले दिवसातनं, जे अवघड शब्द वाटतात ते लिहून ठेवायचे, त्याचा अर्थ लिहून ठेवायचा, आणि त्या पद्धतीने तुला करता येईल. Okay. So we have 2-3 questions from Prakash. He's saying, can engineering graduation students also eligible for PG in political and social science field for foreign university? And another question he's asking is,
asking what could be the benefit of doing PG in foreign university compared with the doing PG in India's top central university. And last question he is asking, does foreign university offer PG in core subjects like MA political science or on particular topic of political science? So the first question is, who is this person? Prakash. Prakash. So Prakash, about your first question, that whether they offer degree in political science in spite of doing your graduation in engineering. So there might be certain universities which can offer you degree in political science in Germany or in other foreign universities. It depends on their criteria, right? And I think I myself come from very multidisciplinary background. I did my graduation in agriculture, then master's in development studies, MPhil in social science. I worked in caste scrutiny and skill development departments, and now I'm doing Ph.D. in sociology. So you can see my profile that I have worked in different background, multidisciplinary, interdisciplinary background. So I think that should not be an issue while applying to political science. If you have clarity about why you want to apply for post-graduation in political science. So the first question is, yes, it is possible. You just need to check the criteria of the university you are applying. The second, okay, what are the benefits of doing post-graduation in foreign country? The first benefit could be you will get an international exposure. You will learn about new country, culture, language, and since you want to do your PG in political science, you might get an opportunity to understand the politics of new country, how it works, how democracy, or what are the different political system they have in the country in which you are willing to apply. You will also get an opportunity to interact with students from different countries, which will definitely help you to improve your understanding about politics or subjects related to political science, which will give you different perspective to understand India or to understand our own country. So definitely it is beneficial. And the third could be core subject. Yes, they do provide degrees in core subjects, and that is why they have this QS World University rankings in different countries, because I have recently learned that they provide QS World University ranking based on the core subject, where you do research on in basic discipline like sociology, political science, law, or even in science, biology. So when you do research in core subjects, or if you just go through the QS World University ranking list, you will find that most of these universities provide courses in core disciplines only. So yes, they do provide a degree in political science in core disciplines. I think I hope I have answered all your questions, Prakash. And Okay. And I think he has also asked, madam, does some documents are required for PG? Same documents? Yes, most of these documents are same, except research proposal. So if you are applying for postgraduate, they might not ask you for research proposal, but all other documents are same. Okay, Sneha is asking, saying, ma'am, you have said that you read books for writing your proposal. Could you share a website to get books for free? I think Sneha, there are many free sources, so there you can, from there you can download books for free. So if you will message me or email me, so I can links of those free resources, so you from there you can download books if you any required.
So, and I have also messaged Shodh Ganga, JSTOR, EPW, Sage Journal, and also tried to search about these themes: climate change, tropical summer. Try to search about these themes so that you will get different articles. Sneha. okay. So now we are going to take questions from YouTube. So here Vikram is saying, how does one decide on which country to study in? किस तरह से कोई डिसाइड कर सकता है किस कंट्री में कौन सी उसको country जाना में चाहिए? जाना है? हाँ, यस यस. और Okay, एनी एज लिमिट और एनी एज लिमिट है क्या कोई मास्टर्स के लिए और माइंस बैचलर्स के लिए? I think Vikram, thank you for your question. Age limit hai, there is age limit for scholarship, but they might have certain age limit for master's degree. But as I said in my presentation, that how to find university. So it depends on which topic you want to do your which course he is willing to apply for. Postgraduate? Course he didn't mention. He was just want to ask about masters or bachelors. Okay, masters. So it depends on which course you want to pursue during your masters. And I think so. See, if you want to apply USA in United States of America, so as per my understanding, GRE they ask for GRE exam, GRE language exam, which is GRE is of 320 marks, and out of 320, you need to have minimum 310 to get full funding in United States of America. And then in other European countries, they don't ask for GRE, but they do ask for TOEFL and IELTS exam. So GRE basically consists of logical reasoning, mathematics, and maybe those who are from engineering background, for them it's easy to apply for GRE exam. But those who are not from mathematical background, they can go for TOEFL and IELTS exam. So this could be one criteria, Vikram. The second criteria could be you try to find a course or a university according to university QS World University ranking, and maybe you can find this university, where this university is located, and then you can start applying. Okay. I hope it's helpful. So now we have a question from Rupesh Fuljale. He is saying, public university के एडमिशन के लिए जर्मन किस लेवल तक रिक्वायर्ड है? रुपेश, तो जर्मन लैंग्वेज लेवल में सिक्स लेवल होते हैं: A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2. तो ये 3 लेवल मतलब 6 लेवल होते हैं. तो आपको अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और अगर वो वहां का कोर्स जर्मन में ही है, तभी आपको जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट देना होगा. अदरवाइज अगर आपको वो कोर्स इंग्लिश में वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. तो वो डिपेंड करेगा कि तो B2 अगर लैंग्वेज जर्मन में वो पढ़ा रहे, तो B2 आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट. अदरवाइज वो लोग इंग्लिश में भी उनके बहुत सारे कोर्सेस होते हैं. Okay. So now we have a question from Parveen. He is saying, what we do to submit the language score card before applying? Do we need to submit the language score before applying? Before applying, I think we... Or at the time of application. At the time of application, yes. So Praveen, you at the time of application, if you have all other documents like your research proposal, transcripts, and SOP,
and academic certificates. If you have everything except language certificate, then you can always ask them for some time to submit your language score. But again, it depends on the deadline. If you are applying through formal admission process, most of these universities have deadlines, so you need to submit then that language certificate within that time. But if you need some more time, then you can always ask the university. Okay, thank you. So now we have a question from Neha. She's saying, as per NOS J1 visa and university sponsoring J1 visa are required. Can you please explain? As per NOS, Yes. National Overseas Scholarship. Okay, so these are, I think, J1 and Schengen visa. In which country did she No, she mention? didn't mention. Okay, so J1. Can you please read the question again, Rahul? Yes, as per NOS J1 visa and university sponsoring J1 visa are required. Can you please explain? See, I have idea about two types of visa: student visa and employment visa. And in Germany, they also have Schengen visa, which is valid for 32 countries, and all you can travel in all over Europe. And I think I think university J1 visa is is required for US maybe. USA, I think, right? And so if the university is providing funding, and in that case, they might ask for J1 visa. Yes. But the process could be different, Neha. You need to search at the embassy website of this USA. Maybe you will get some idea, because since I have not applied for J1 visa, I have I don't have any idea. But yeah, you can always write to Digital Nalanda's email, and then maybe somebody will help in this. Yes, you can write to us. We would be happy to answer your question. Yeah. Okay. Sorry, Neha. Tanuja, can we apply for masters in foreign countries? Yes, you can. Can we apply for? Masters in foreign countries. Bilkul, yes, you can apply. So now we have a question again from Neha. How to reach out to university for application fee waiver? How to Application. defer fee waiver? Okay. So see, it depends on the university to which you are applying. But you can always apply, or you can always write to the admission team of that university that you are not in position to pay the fees, and they should waive off the application fee. I think this could be one of the option. The second option could be, if you have a letter of admission from your supervisor, if you are applying for PhD, then you can ask his help in this. Yeah, these are the two options, I think. Okay, see, have one more question. How to defer admission if annual scholarship is not received? That in that case as well, you need to write to the admission team of that university, and I think they do extend your admission for 1 year. Okay. So I will suggest, Neha, you should write to the admission team of the university, and you should ask that I need 1 year time or 6-month time to submit your scholarship letter, and maybe they will consider it. Okay, we have a two question from Rupesh Fuljale. He's saying, is there any deposit required to get a conditional offer letter from university? Any deposit in the sense, in deposit money? Money, yes. No. They don't ask you to deposit any money to give you a conditional or unconditional offer letter. Like, as per my knowledge, I don't think so. They will ask you for any money. Yes, they don't ask. ये again he's asking, वीजा के लिए फाइनेंस कितना दिखाना जरूरी है?
visa to see if you get a fully funded scholarship, then there is no need to show any balance or any balance in your account. But if you don't have funding, तो आपको वो भी in Germany में I think if you don't have any, if you are applying in Germany and if you don't have any funding, then you need to show minimum amount of I think 8 lakhs maybe, but I'm not sure because वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, है ना। तो वो जो पर मंथ लिविंग कॉस्ट है उस कंट्री का, उस हिसाब से अगर आप 6 महीने के लिए जा रहे हैं और 6 महीने का जो भी कॉस्ट होगा लिविंग कॉस्ट, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, उतना आपको दिखाना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, लिविंग कॉस्ट ऑफ दैट कंट्री and the time period for how long you want to be there. Yeah. I hope I'm giving right answers. Yeah. Yeah, you are not audible, Rahul. Oh, sorry, I was muted. So we have one more question from Vikram. He's saying better to do. Is it better to do bachelor's in India or somewhere in foreign, which is more valuable? So I think it's always better to do your bachelor's in India because then you will get with the age you also get an experience to live in hostels, to interact with people, and so maybe it also depends on how adaptable you are, in different situation. So it's better to complete your bachelor's and then go for masters rather than directly after 12th. If you are planning to go after 12th for bachelor's, then also it will be good if you have some relatives or if you know some people. It's easy, like there are both positive and negative sides of this. So if you go in your bachelor's, you will get to know many people. You will easily find friends, because in PhD it's difficult to find friends because you are independently working on your topic. You don't go to classes every day, you are on your own. But in bachelor's, since you have classes every day, you get an opportunity to interact with different people, you can stay with them. So there are both advantages and disadvantages of this. It depends on how you are able to manage. Okay. So we have a question from Tanuja. She's saying how to reach out to professor to communicate. Is there any email ID mentioned or something? Tanuja, if you were there during the entire duration, you might have get an idea about this. But anyways, so when there are no specific email IDs of professor, but if you shortlist your university according to your topic, you can always search your university through QS World University Ranking. And then when you finalize your university, you can look at the centers. Like there are different departments, right? In any university: Department of Sociology, Department of Political Science, Department of South Asian Studies. And on that department website, you might get some contact details of the head of or director of the center, or maybe you should go through the faculty profile, where you will get an idea on which topic these faculties are working, and if your interest area or research area is similar with the professor there, you can directly write to him, or you can write to the head of the department to connect you with someone who is working on the similar research topic. I would encourage Tanuja, you please again go back and watch this session from the beginning. So maybe you will get idea in detail. Okay. So ये रुपेश का क्वेश्चन है, उन्होंने
एक LOR academics से ना लेके इंटर्नशिप किया है वहां से लिया है, तो बोल रहे हैं ये हेल्पफुल है क्या? I think कितनी बिल्कुल हेल्पफुल helpful है, बिल्कुल है, रहेगी? because you have worked with those people, right, during your internship, and I think they will accept this. I think they might, yeah. लेकिन helpful है, as per my knowledge. If you are working, letter of reference is all about that somebody is recommending you, that you are capable of doing certain research, or doing or pursuing certain course in that university. So letter of recommendation is all about that. And if you are doing internship in certain organizations, and they are giving you letter of recommendation that your research skills are good, you can develop research problem, you can develop your research proposal, you are punctual, you are, so yeah, they will consider it, they should consider it actually. Okay, so Vikram, if you want to connect us or you want to ask any questions, so you can go to Digital Nalanda website and you can have our email ID from there and you can email us. So we would be happy to answer your questions. Yeah, I think we don't have any. For now, I don't think we don't have any question, but I have 2-3 questions. Yes, Rahul. So I just want to know that if someone complete his or her PhD from your university, so what are the job opportunities for them in Germany as well as in India? Okay, so see, PhD is I think it's also a process of learning to do, like, to how to do research, or Yes. it is also about developing your research skill, time management, how to work under pressure, how to publish research paper, how to connect with people from different disciplines. So I think doing PhD is also kind of work experience which you will get when you are doing your PhD. You can always go for your postdoctorate if you are willing to know, because in Germany they have habilitation program for 2 years where you need to thoroughly study the core concept or core discipline. So if you are in sociology, you need to, for 2 years after your PhD, you will go for habilitation, where you will thoroughly study the basic theories, critical theories of sociology. And you will write a monograph or literature research, where you try to publish original research papers, and from there, after your habilitation, you will work as a junior researcher or junior research professor. And I think after a few years, maybe you will get an opportunity to work as an assistant professor, and maybe after few years, professor. So I think Germany is the only country where they provide this habilitation for 2 years, and it's compulsory, unlike any other country. I think which is also very important, because when you are in your bachelor's or master's, in my case, I have no idea about how to conduct research when I was in my bachelor's, because there was no such thing. But even in my master's, I just started learning first step of doing research. So it's a I think time taking process, and so you can always go into research and policy making after your PhD. But the plus point of doing PhD in foreign university is that you will get a lot of international exposure. You will get to get an opportunity to interact with people from Pakistan, Australia, Vienna, China. So in my university also, I am able to make friends with people from different countries, and which is, I think, in a way developing my understanding, my perspective about understanding people, country, their culture, politics, say for example. So it's always a good opportunity to do your PhD. You can always go into research,
or you can always go into policy making. You can work in different think tanks which are working in India, where you can provide your inputs. You can do, you can be a part of policy making, I think, which is a wonderful opportunity for, especially for those who are coming from marginalized background. If you want to change something, so if you are in a policy making, you can do a lot of things, I think. You can recommend, you can change the policy, because, and through policy you can change the day-to-day lives of the individual. I will share one example. When I was recently, I went to Austria for my summer school, where we are in third world country, right? We are in developing country. But I have also learned recently that we all are in developing phase in one or the other subject. So during this summer school, I found that one a group of people, they were working on, they published a book about using the common spaces. जो बिल्डिंग्स या फिर जो सोसाइटी होते हैं, उसमें जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक है, वो कितना एरिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 40 बाय 50 फीट का एरिया, तो उसको लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर वो पार्क, एक्चुअली इट वाज अ पार्क, तो वो उसके बारे में दे हैव पब्लिश्ड वन बुक by conducting thorough research about how to use that public space, who is using that public space, and what their requirement, why they are using or not using that public space. And then I understood, since we are struggling in India to get a basic education, right? For like 70% of nomadic children are still not in school. I think this is the difference between developed and developing country, but they are doing this. They are researching. They are doing research on such a small space to make people's life better, and I think we can do much better than I'm not comparing. Yes, but yes. If we want to change education system, if we want to provide education to everyone in our country, we should be there to develop our these public policies, and and then the third option could be you can teach at a different university, and fourth option could be you can work in industry where they need research. They do industrial research, and so there are different opportunities. Okay. Yeah. So I have one or two more questions just related to this only. So I also want to know that what are the benefits? So actually this is like that. Why should we do PhD or masters in social science or sociology in Germany rather than other countries? Okay, so but I will not recommend. I think you can do your PhD in social science in any country which you like, because it's also depend on your research topic, right? Yes, yes. But in Germany, I think the plus point is if you are in European country, you can travel all over Europe on just one visa. So this is, I think, the plus point. And the another important thing is, since most of the social thinkers are from Germany, Marx, Seneca, I don't know, Habermas, and even in my university, the Frankfurt school is in my university. So they invented this Frankfurt school of whole sociological thoughts in Germany. So the plus point is you will get an opportunity to interact with people from those who are working on the original sociological theories or thoughts. The second could be you can travel in 32 different countries on one visa. Third could be you can learn new language, German language. You will get an opportunity to learn more about, since Frankfurt is very international city where you will find people from different, like all over the country, all over the world, and this could be, I think, great opportunity to interact with people from different countries, and
So one could be the research, because for research and I think Germany also have very different approach. You will not find very hierarchical way of doing things. Even in university, you are working with professor. You are not working under professor. So it's mutual learning, I would say, and you will always get that space. Even if you are not very good in your language, you still don't feel like you are judged by people, or you are judged by your appearance or language. I think this is very important, and you feel equal. I think it might be different, like everybody has different experiences, but I think Germany has very hierarchical way of doing things. Even they give you they provide all kinds of support. In my university, they organize different workshops and seminars about starting from your language. Even for English language, they have classes. For German language, they have classes for how to write a research paper, how to publish research paper, how to maintain your mental health. Even in my presentation also, I mentioned that mental health is also very important, which is not paid much attention in many universities in India, but here they provide. I think Germany is the only country where counseling is free all over the country for everyone. It might be because of some historical reasons, but still, I think it's important. And yeah, these are, and you can get an opportunity to meet me. Yes, yes. Maybe this could be the last. One Or last question. So after completing PhD or masters, will you get, or someone get, work visa to work there in Germany for how many years? Yes, actually in the morning only I was reading one article. They have published that they are thinking this citizenship rules, and I think after 3 years you can apply for citizenship. And if you complete B2 level of German language, then you can always apply for work visa. Language is the main requirement they have. Okay. After, no matter you have done your masters or PhD from You their should university. be here for minimum 3 years. Okay. According to their new rules. I think they are changing their citizenship rules for migrants. So according to that, if you stayed in Germany for 3 years, and if you have a B2 language certificate, you can apply for work visa or citizenship. Okay. Thank you, Deepali. Thank you so much. Thank you, have Rahul. And answered. I think Sneha, I have experienced that the university asked for deposit. We have answered this, right? No deposits are required. Balaji, thank you for your comments. And I think all other participants. Balaji, Hitesh, Prakhar, Chotu Kumar, Prakash, Neha, Renuka. Yeah. Thank you everyone for staying so long. Thank And you. I would like to thank Digital Nalanda, team of Digital Nalanda, and everyone who made this possible. And I would also like to thank all the participants for patiently listening to all my answers. And I will be happy to connect with you if you have any queries further. And thank you very much, Rahul, for doing this. Thank you, Deepali. Shweta, yeah, Shweta, thank you, Shweta. Chotu Kumar, thank you. Chotu Kumar did not ask anything, but yeah, let's see. Okay. Thank you, Deepali. Thank you for giving us your precious time and valuable time. And it was a very wonderful session. You have covered many important things. I think these all your guidance will help our students to pursue their career in Germany or in foreign universities. Yes. I hope it was helpful. And if you have any specific questions, I will be happy to answer. Yeah. Okay. Thank you then, Balaji. Should we stop here? Yes. Thank you.